बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। Next lecture we have started JavaScript from previous lecture, and today is the second lecture of JavaScript. Today we are going to cover JavaScript functions, JavaScript objects, JavaScript conditions and loops. Okay, starting from JavaScript function. JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. You can see a function. First of all, we use a keyword function. Then name of the function, my function. Then there are two parameters, P1 and P2. Then there is body of the function, and it says return P1 multiplied by P2. So what is, if we compare with C, so what difference do you feel? तो रिटर्न टाइप नहीं इसमें स्पेसिफाई करनी पड़ती ना। सी में रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ती है, इसमें रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिंटैक्स सेम ही है, बाकी सिंटैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। कुछ और डिफरेंसेस हैं, वो हम आगे देखते हैं। Why functions? You can reuse code, the same typical concept which is prevailing in all the languages. You can use same code many times for different arguments to produce different results. For example, there is another example of a function. Here name of function is 2 Celsius. You're getting a parameter Fahrenheit, and then there is some calculations, and the calculations are going to return some value. So it is basically Fahrenheit to Celsius conversion function. Now in the bottom statement you can see how this function is being used or called or executed. You may say any word. So here you can see we are replacing content of an element as ID demo. Typically we are using one paragraph. We have made a paragraph setting and we have given it ID name demo. So we basically are replacing the content of paragraph. So this is a standard statement, document.get element ID demo inner HTML is equal to 2 Celsius. So this is name of function, and we are calling this function, and we are passing a parameter 77. This 77 will pass in, and it is going to subtract 77 will subtract 32, and the resultant is going to be multiplied with 5 by 9. So we'll get some result. That result is going to be returned, and the returned number will be replaced by this function. So it is 25 or 35. So that actual number is going to be replaced in place of function. Any question on my explanation? नो सर, लेकिन सर कोई इसकी लिमिटेशंस तो नहीं होंगी फंक्शंस की कि यहाँ इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई इसका कोई वो आगे आके देखते हैं, जो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस आएंगे वो मैं बताता जाऊंगा। तो यहाँ पे तो टिपिकल जो फंक्शन का रोल होता है वही है, लेकिन हमने HTML एलिमेंट में कैसे HTML पेज में कैसे यूज़ करना है वो एक नीचे उसका यूज़ आ गया। यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट पे हाउ वी आर गोइंग टू वी आर यूजिंग दिस फंक्शन। आगे चलते हैं।
syntax. JavaScript function is defined with the function keyword, this one, followed by name of the function, followed by parenthesis, and the parenthesis may include parameter name separated by commas. अच्छा, यहाँ पे आपको C के मुकाबले में क्या डिफरेंस लग रहा है सिंटैक्स में? If we compare with C, there is a slight difference. क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? कोई खास नजर नहीं आ रहा। पैरामीटर की डेटा टाइप टाइप नहीं है, हाँ, पैरामीटर की टाइप स्पेसिफाई नहीं करने की जरूरत इसमें है, ठीक है, डेटा टाइप स्पेसिफाइड नहीं है। ओके, सो JavaScript function as variable value. Functions can be used in some way, or you use variables in all types of formulas, assignments, and calculations. Instead of variable to store the return value of function. For example, ये function है, हमने पिछली slide पे देखा. We are declaring a variable and we are assigning it a function. क्या ख्याल है, C में कर सकते हैं इस तरह? और सर मेरा नहीं ख्याल कि करके किए कभी किए? नहीं सर, नहीं किया। तो चलें इसको टेस्ट कीजिएगा, सी में ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो व्हाट विल हैपन, द कैलकुलेशन ऑफ द वेरिएबल इज गोइंग टू बी व्हाटएवर नंबर विल बी रिटर्न, दैट विल बी असाइन्ड टू एक्स straight away at the time of declaration of a variable. So that's why we are saying that functions. अच्छा, अब इसका यूज़ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आगे मैं बता दूँ आपको। अब अगर हमने यूज़ करना है सेल्सियस को, बल्कि नाउ वी कैन यूज़ एक्स एज, क्योंकि इसमें वैल्यू आ गई है, कोई नंबर आ गया है एक्स में, तो इन a string we are using x. So this x, whatever value will be there, it will become part of the string and it will be printed. ठीक है जी, ये typical concept है. You can use function directly as variable value, और ये आपने direct भी हम function को लिख सकते हैं, but this is string के अंदर हम function डाल सकते हैं, C में भी हो जाता है इस तरह, और ये कोई नई चीज़ नहीं है. We can make part of function as part of string, जो भी value return होगी that will become part of the string. ठीक है जी, any question on this slide? no sir. Thank you. Okay, functions as objects. The type of operator in JavaScript turns function for functions. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? For example, ये एक console है, ये console है. We can do some testing on the console. To Celsius, ये function मैंने बना के इसमें रखा हुआ है. For example, if I pass to Celsius 77, so it has returned 25, number 25. It is same function which has been added here. Okay, now if I write type of to Celsius, ये function की type क्या है? So you'll find that it is returning us a function. It means that to Celsius is type of a function. इसलिए function जो है, ये समझ लेंगे, function जो होते हैं एक तरह के objects के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं हम इनको, and these are objects of a function type.
But JavaScript functions can best be described as objects. JavaScript functions can best be described as objects. JavaScript functions have both properties and methods. अब इन functions की अपनी properties methods भी होती हैं, जैसे कि हम किसी भी objects की property methods हो सकते हैं. For example, arguments dot length is a property which returns number of argument of any function received when function was invoked. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक फंक्शन नजर आ रहा है, माई फंक्शन पैरामीटर्स में 2 पास कर रहे हैं हम, a कॉमा b, एंड वी आर रिटर्निंग, वी वांट टू रिटर्न आर्गुमेंट्स डॉट लेंथ. So once we will return arguments dot length, it is going to return us 2 because there are 2 arguments. So it's this return should return number 2. So from where this statement has come, arguments dot length, it is a property of a function. So it can be applied on any function. क्यों apply कर सकते हैं? क्योंकि function is type of function, and function at higher level abstract type function has some properties and methods. So in case I write in this HTML statement, if I write my function 4,3, then it should return 2 because we are returning length of the argument, and arguments are 2. So we are getting a number 2. Any question on this slide? No, sir. Okay. Let's move forward. जी. सर अभी भी एक चीज़ नहीं सर कि इसकी यूज़ क्या है, कि अगर हमारे पास पहले फंक्शंस हैं तो फंक्शंस के लिए टाइप ऑफ की क्या हमें ज़रूरत है? अगर Functions की length, यानी कि सर function की length, सॉरी सर आप सॉरी लेंथ, आर्गुमेंट्स की लेंथ की क्या जरूरत है, यही क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, टाइप ऑफ की, कंसीडरिंग कि हमने देखा है कि वेरिएबल्स खुद फंक्शंस रिटर्न कर सकते हैं. अच्छा देखें, बेसिकली जो ना टाइप ऑफ तो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर, और हर लैंग्वेज में ही होता है, जस्ट टू चेक द टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. तो टाइप ऑफ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट में, और उसका रीज़न ये होता है कि बिकॉज जो आप इनिशियलाइज करते वक्त जो वैल्यू देते हैं वो टाइप आ जाती है, वेरिएबल की वो टाइप बन जाती है. तो कई दफ़ा आपको ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग आपको अंदाज़ा नहीं होता कि पता नहीं इसकी क्या टाइप चल रही होगी भी सब पीछे से, क्योंकि आपने उसकी बेस पे कोई अपनी लॉजिक बिल्ड करनी होगी. तो इसलिए जनरली जब प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट में की जाती है तो आप जो फर्स्ट चेक इट्स टाइप एंड देन यूज़ इट. तो इसी तरह फंक्शन की भी टाइप अगर आप चेक करें तो उसकी टाइप फंक्शन आ जाती है. टाइप ऑफ इज एन क्वाइट यूजफुल ऑपरेटर इन जावास्क्रिप्ट. तो यहाँ पे सिर्फ बताने का मकसद ये है कि फंक्शन की अपनी टाइप भी एक फंक्शन होती है. तो फंक्शन की टाइप फंक्शन होने से हमें ये मैसेज मिलता है कि फंक्शन इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम सुपर टाइप फंक्शन. और किसी भी टाइप के प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स वगैरह हो सकते हैं, जैसे किसी क्लास के होते हैं, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ मेथड्स वगैरह होते हैं. बस यही इसका मकसद है. समझाने का मकसद ये है कि इनके सी के फंक्शंस में इस तरीके से मुख्तलिफ उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं होती, लेकिन इसमें हैं. इसके फंक्शंस की अलग से भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, जबकि सी में इस तरह नहीं होता. ठीक है जी, ठीक है सर. ओके. फंक्शंस टू स्ट्रिंग मेथड. और इसी तरह एक और मेथड फंक्शंस का होता है, इट इज कॉल्ड टू स्ट्रिंग. टू स्ट्रिंग फंक्शन इज क्वाइट कॉमन इन जावा. इसमें भी यूज कर सकते हैं और इसका बड़ा इंटरेस्टिंग यूज है. द टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न्स अ फंक्शन एज अ स्ट्रिंग. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फंक्शन है, फंक्शन माई फंक्शन getting two arguments a comma b and it is returning something. Now and this is body of the function or definition of the function or declaration of the function. This one just one liner.
Now, if in HTML tag, I write inner HTML is equal to my function to string, so it is going to return the body of the function. Complete उसकी जो function की body है वो पूरे का पूरा उसकी definition को return कर देगा to string method in the form of string. एक string ही बनाएगा उसकी पूरी का पूरा और उसको, और ये भी कई दफ़ा आपको इस तरह की जरूरत पड़ जाती है. So it is an interesting use of to string method of function. किसी भी function का आगे to string करेंगे तो उसका पूरी पूरी body की list डाउन हो जाएगी body कि उसकी क्या definition है. Any question here? No, sir. Okay. Functions can be used as values. Functions can be treated as values. For example, एक function है my function, it has some arguments, so I can do like this. X is equal to my function 4,3. ये example पीछे भी हमने देखी है. We did it while declaring, जैसे ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है variable x my function 4,3. ये एग्जांपल हमने पहले भी देखी थी. तो बेसिकली होना होगा क्या कि इसमें फॉर एग्जांपल अगर ये मल्टीप्लाई का फंक्शन है तो basically x12 will be saved in variable x, and once we will write inner HTML is equal to x, then 12 will be printed. So we have, instead of using function, we are using a variable, and we have assigned a function to a variable. ये पिछली स्लाइड पे भी देखा है, वही चीज समझे तकरीबन एक तरह से रिपीट हो गई है. ओके, फंक्शन एज एक्सप्रेशन. The JavaScript function can also be defined using expression. A function expression can be stored in a variable. After a function expression has been stored in a variable, the variable can be used as a function. अब यहाँ पे देखें, ये एक फंक्शन की हमने फंक्शन का एक्सप्रेशन लिखा है पूरे का पूरा या डेफिनेशन लिखी है, एंड द सेम द डेफिनेशन हैज बीन सेव्ड इन अ वेरिएबल. पिछली स्लाइड में इस तरह नहीं था. पिछली स्लाइड में क्या था? पिछली स्लाइड में और इस स्लाइड में क्या डिफरेंस है? इस एग्जांपल में ये यहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे क्या लिखा है? वेरिएबल एक्स माई फंक्शन 4,3. ठीक है, जबकि फंक्शन की जो डिक्लेरेशन है वो सेपरेट पड़ी हुई है एक जगह पे. तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेट अवे उसका एक्सप्रेशन ही आप वेरिएबल में सेव कर रहे हैं. ठीक है, इट इज समथिंग डिफरेंट. ये सी में नहीं आई ये चीज़ कि पूरा इसका एक्सप्रेशन ही आप वेरिएबल में सेव कर दें. नाउ इफ यू वांट टू मेक यूज ऑफ दिस फंक्शन, आप वेरिएबल एक्स को यूज करेंगे और पैरामीटर फंक्शन के पास कर देंगे. एक्स को आपने पैरामीटर पास कर दिए फंक्शन वाले. सो इट इज अ परफेक्टली लीगल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट, but it is not possible in C. Any comment or question on this slide? चले आगे. Okay, arrow functions, another interesting kind of functions. Arrow functions allow a short syntax for writing function expressions. You don't need the function keyword and a return keyword and curly brackets. For example, ये एक typical function है which you are familiar with this syntax in C. Function x comma y return x into y, and we are assigning the whole expression to a variable. So in JavaScript 6, new arrow functions were introduced, and here you can see the syntax is quite different.
एक तो देखिए फंक्शन कीवर्ड, क्योंकि हम डायरेक्टली एक फंक्शन असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, तो फंक्शन के नाम देने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम नज़र नहीं आ रहा आपको, नो नेम ऑफ द फंक्शन। तो क्योंकि ये जो x है, x इज गोइंग टू बी यूज्ड एज अ नेम ऑफ द फंक्शन, तो इसका मतलब है कि हम जो इज इक्वल टू साइन के राइट साइड पे हम फंक्शन कीवर्ड निकाल सकते हैं, वो यहाँ से निकाल दिया। एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद x, y। So x, y are basically input parameters for a function। उसके बाद अब हमने ये रिटर्न स्टेटमेंट डालनी है या बॉडी लिखनी है फंक्शन की। तो बॉडी लिखने के लिए हम ये एरो साइन यूज करते हैं, एरो एंड एरो साइन है इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। तो जो राइट साइड पे हम लिख रहे हैं, इट इज बेसिकली बॉडी ऑफ द फंक्शन। लॉजिक जो भी लगाई है जो फंक्शन की, वो यहाँ पे राइट साइड पे आ रही है। एरो के लेफ्ट साइड पे जो पैरामीटर्स हैं जो अपने उसको पास करने हैं, और ये बॉडी है। और होगा क्या, जैसे ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वैल्यू इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कोई वैल्यू आएगी और एक्स में सेव होगी, सो देर इज नो नीड ऑफ इवन राइटिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न ना भी लिखें, लिख भी दें तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है। तो अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो फिर भी ये रिटर्न करेगा और जो भी वैल्यू है एक्स में डालेगा, एंड अ कांस्टेंट एक्स इज गोइंग टू बी, कांस्टेंट एक्स वेरिएबल इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। अच्छा जी, यूजिंग कांस्टेंट इज सेफर देन यूजिंग वेरिएबल। ठीक है, जनरली अगर इस तरह की स्टेटमेंट हो तो फिर कांस्टेंट यूज करना बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर ही हम एक्सप्रेशन सेव कर रहे हैं। इसके अंदर हम इसके अंदर एक एक्सप्रेशन सेव कर रहे हैं, बिकॉज फंक्शन एक्सप्रेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू यूज कांस्टेंट कीवर्ड। ये एक्सप्रेशन तो कांस्टेंट है, ये एक्सप्रेशन इसमें सेव हो गया। You can also omit return keyword, as you can see here, and curly brackets, as you can see here, if the function is a single statement। जैसे हम C में कहते हैं, अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, तो इसी तरह इसमें भी कर्ली ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती अगर सिंगल स्टेटमेंट हो। that can be removed, and therefore it has been removed here। And you can also curly bracket if function is a single statement, because of this it might be a good habit to always keep them। तो अगर आप ये लगा भी देते हैं कर्ली ब्रैकेट्स और रिटर्न स्टेटमेंट लगा भी देते हैं, ये पूरी की पूरी इसके आगे लिख देते हैं एरो के आगे, ये पूरी स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, स्टिल इट इज वैलिड। लेकिन ये शॉर्टकट है, तो पूरा लिखेंगे तो क्लैरिटी ज़्यादा होगी आपको भी, और कोई और आपका कोड रीड करता है उसके लिए भी क्लैरिटी ज़्यादा होगी। सो अगेन इट एज अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस, अगर इस तरह का आप बॉडी बनाएंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। एनी क्वेश्चन ऑन दिस स्लाइड? सर सेफ्टी एस्पेक्ट से क्या मुराद है? सेफ, ये जैसे पूरी कि स्टेटमेंट है ना, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये वाली, ये पूरी स्टेटमेंट एक्स में सेव हो जाएगी। दिस एक्सप्रेशन विल बी सेव्ड इन एक्स, ये मतलब है। ठीक है, यानी इसकी इसकी ये बात कर टर्म्स रहे हैं। यस सर कि वेरिएबल में अगर रखें तो शायद फंक्शन ओवरराइट हो जाए, या कि क्या वजह होता वेरिएबल, है हाँ कि वेरिएबल में ये है ना कि गलती से कहीं आप वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं ना, वेरिएबल में आपको अलाउ करता है, आप रीडिक्लेयर कर दें, एक्स को रीडिक्लेयर कर सकते हैं आप लेटर स्टेजेस पे। लेकिन कांस्टेंट रखेंगे तो आपको पता है कि एक फिक्स एक्सप्रेशन रखा हुआ है इसके अंदर, तो आगे इसको आप चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसलिए इसको एहतियातन समझ लें कि इसको कांस्टेंट में रखना ज़्यादा मुनासिब है। लेकिन है कि अगर आप वेरिएबल डालते भी हैं तो आपको एरर नहीं देगा, इट विल, दैट इज स्टिल ओके। लेकिन एज अ बेटर प्रोग्रामिंग अप्रोच दिस इज रिकमेंडेड। ठीक है सर। ओके, आगे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट फंक्शन पैरामीटर्स। JavaScript function does not perform any checking or parameter values, that is arguments। अच्छा जी, ये सिंटैक्स है, हमने पिछली एक स्लाइड पे भी देखा था
कि function parameters are names listed in function definition. Function arguments are the real values passed and received by the function. तो ये कुछ हम डाल देंगे parameters, तो वो values by pass भी by value होगा, ठीक है ना? आगे हम डिस्कस करेंगे इसको. अच्छा जी, पैरामीटर रूल्स, these are important, these are different than C. JavaScript function definitions do not specify data types for parameters. तो आपने देखा है यहाँ पे, अगर ये फंक्शन मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मैं या यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ तो मैं डेटा टाइप मेंशन नहीं कर रहा था, तो डेटा टाइप्स स्पेसिफाई नहीं की जाती जावास्क्रिप्ट में. Second major difference, functions do not perform type checking on passed arguments. क्योंकि डेटा टाइप ही नहीं हम पास करते तो फिर वो टाइप चेकिंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं बनता कि जी पहले फॉर एग्जांपल इंटीजर है, दूसरा स्ट्रिंग है या दूसरा कैरेक्टर है, तो जब आप टाइप चेकिंग डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते तो इसलिए वो भी फिर टाइप चेकिंग भी कोई नहीं होती. तो पैरामीटर जो भी पास कर दें आप, वो पहुंच जाएंगे बॉडी में. आगे फिर अगर आपकी लॉजिक आपकी सपोर्ट कर सकती है उसको तो ठीक है, लेकिन ये इस वक्त पैरामीटर पास करते हुए चेक नहीं करेगा इनकी टाइप्स को. JavaScript function do not check number of arguments received. Again something very interesting. यानी कि अगर ये आपने फंक्शन बनाया है विद 2 पैरामीटर्स और आपने इसको कॉल करते वक्त 3 पैरामीटर पास कर दिए, 4 कर दिए, तो ये चारों ले लेगा पैरामीटर, एरर नहीं देगा आपको. आप उसे फर्दर यूज करें ना करें, आपका फंक्शन ना करे बॉडी में, वो अलग बात है, लेकिन इट विल नॉट रिस्ट्रिक्ट यू कि अगर आपने 2 की जगह 3 भेज दिए, 4 भेज दिए, जो भी भेज दिया, it will allow you to send the parameters. ठीक है, so it will not check number of arguments received. Fourth, if function is called with missing arguments, यानी कि इसके arguments तो 2 हैं, आपने एक argument साथ भेज दिया है, उसको कॉल कर लिया, तो that is less than declared, then missing value is set to undefined. तो यानी कि x की वैल्यू आपने x पास किया, y पास नहीं किया, तो y की जो टाइप है वो अनडिफाइंड सेट हो जाएगी जब बॉडी में जाएगा, तो बॉडी एग्जीक्यूट होने लगेगी तो y विद अनडिफाइंड इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है, तो समटाइम्स this is acceptable, but sometimes it's better to assign a default value to the parameter. तो एक तो तरीका ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है y कोई डिक्लेयर ही ना करे और फंक्शन कॉल कर ले, तो क्योंकि अब वो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम एक इस तरह की लॉजिक लगा सकते हैं, इफ y इज इक्वल टू अनडिफाइंड देन वी मे स्पेसिफाई सम डिफॉल्ट वैल्यू. हम कहते हैं y की वैल्यू 2 एज्यूम कर लें आप, अगर अनडिफाइंड है तो एक तरीका ये हो सकता है. दूसरा तरीका ये लेफ्ट पे नज़र आ रहा है आपको कि हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहीं पे उसके डेफिनेशन में ही डाल दें, y इज इक्वल टू 2 कर देंगे, तो इसका मतलब है कि इसकी ये चीज़ आपको पूरी बॉडी नहीं लिखनी पड़ेगी, ये यहीं पे डिक्लेयर हो जाएगी डिफ़ॉल्ट वैल्यू y की के. और डिफ़ॉल्ट वैल्यू कब एक्टिवेट होगी, जब y हमने पास नहीं की, y की वैल्यू पास नहीं की, तो y को ऑटोमेटिकली ये वाला नंबर 2 असाइन हो जाएगा. ठीक है जी, सो these rules are different than C. Any question on this slide? No sir. Okay. So these rules give quite a flexibility to us in JavaScript. Arguments are passed by value. You already know, and you already know and see, generally we pass the arguments by value unless we use some pointers, etc.
So the parameters in the function call are functions arguments, and JavaScript arguments are passed by value. The function only gets to know the values, not the argument's location. अच्छा जी, if function changes an argument value, it does not change parameters original value. यानी कि अगर function की body में आप जो पैरामीटर रिसीव हुए उनकी वैल्यूज चेंज कर देंगे, तो क्योंकि वो बाय वैल्यू पास हुए हैं, इसलिए जो ओरिजिनल जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी फंक्शन से बाहर वैल्यू चेंज नहीं होगी उसकी. दिस इज टिपिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पासिंग बाय वैल्यू. द चेंजेस टू आर्गुमेंट्स आर नॉट विजिबल और रिफ्लेक्टेड आउटसाइड द फंक्शन. फंक्शन के अंदर जो चेंजेस करेंगे वो फंक्शन के अंदर ही नजर रहेंगी, फंक्शन से बाहर नजर नहीं आएंगी. Any question on this slide? No, sir. Okay. The arguments object. ये arguments object हमने पहले भी एक example में देखा है. Another discussion. JavaScript functions have built-in object called arguments object. The arguments object contains an array of arguments used when function was called or invoked. तो जब इन्वोक करते वक्त, फंक्शन कॉल करते वक्त जितने भी पैरामीटर पास करते हैं वो एक आर्गूमेंट्स के ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाते हैं. तो इसका मतलब है कि हम उस नंबर ऑफ पैरामीटर जो पास किए उनको काउंट कर सकते हैं. So for this we use arguments.length method, and this way you can simply use function argument.length to get highest value in a list of numbers, total number of, to get total number of arguments. ये sentence बदल लिख दिया, total number of arguments. Okay, let's see two examples of using arguments object. This is sample use of arguments object. Let's discuss the left function first of all. We have this is a function find max. Find max function finds the maximum value or highest value. अगर फॉर एग्जांपल ये हम पैरामीटर्स पास करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 500 है, तो 5 max is going to return 500. Let's see the logic. We are declaring a variable I, then we are declaring variable max, and we are putting it to minus infinity. Minus infinity is also, you can say, you can assign a value minus infinity, you can assign value plus infinity as well in JavaScript. So we are assigning value minus infinity, and now we are using a for loop. I is equal to 0 and I is equal to मैक्सिमम आर्गूमेंट. अभी आर्गूमेंट कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6. अगर हम ये वाला 6 आर्गूमेंट्स के साथ फाइंड मैक्स कॉल करेंगे तो आर्गूमेंट्स डॉट लेंथ की वैल्यू होगी 6. So it will be I is equal to 0, I less than 6 and I plus plus. And here what are we doing here? It picks the first argument, argument 0, that is 1. It compares it with max, which is minus infinity. So if the condition is true, it will be true. So what will happen? The argument number 0 is 1, so 1 will be assigned to max. 1 will be assigned to max. In second iterations, second number, that is 1 2 3, will be compared with max, which is 1. So if 1 2 3 is higher, then 1 2 3 will be saved in max.
So this is how comparison will be done one by one, and the highest value, which is 500, at the end, the highest value, which is the highest number, that will be stored in max, and max will get the 500 at the end of for loop, and it is going to return max, which is 500. Now this is body of the function, and now we call function. Here you can see the body of function does not have any argument. That is interesting, that this find max function has no argument, but once we are calling it, we are passing 6 parameters. We are passing 6 parameters, and those 6 parameters are because it is outside the function, so it is global. So this x will be visible in the function, within the function. So once we write argument dot I, so the complete parameters will become a sort of array, और array पास हो जाएगी, और उसके हर आर्गुमेंट का पहला आर्गुमेंट, दूसरा, तीसरा, ये चेक कर सकते हैं आर्गुमेंट 0 1 2 3 लगा के. So this is how we are calculating the maximum value, and how we are making use of arguments object. Let's see an example of right side. It is summing all the arguments. So what are we doing? First of all, we are declaring sum variable, initializing it to 0. Then same statement of the for loop, but here we are adding previous sum value to, we are adding argument, each parameter of the argument to the sum variable in each iteration. Ultimately, once for loop will be finished, the total of summation of all the arguments will be there, and it is going to return that. So these are two uses of arguments object of functions. Any question on this slide? Okay, let's move forward. Objects are passed by reference. ठीक है, पैरामीटर पास हो रहे थे बाय, कोई भी आप वैल्यूज पास करेंगे तो वो पास होंगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं आर्गुमेंट्स, दीज आर पास बाय वैल्यू, बट ऑब्जेक्ट्स आर पास बाय रेफरेंस. ऑब्जेक्ट्स आर पास बाय reference, and in JavaScript object references are values, and because of this objects will behave like they are passed by reference. पूरा ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो वो बाय रेफरेंस पास होगा, और उसके अंदर फिर डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, हर उसके जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूज हो सकती हैं. If function changes an object property, it changes the original value. यानी कि अगर ऑब्जेक्ट की किसी वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो वो वैल्यू एक्चुअली ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज हो रही होंगी, ऑब्जेक्ट में चेंजेस आएंगी. तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट is created outside the function, then those changes will be visible in the object outside the function. Okay, so let's have a 5 minutes break before moving forward. Let's have a 5 minutes break.